Hello, Assalamu alaikum. I just want to start by saying that I have been going through all the comments and I've been getting messages. मुझे Instagram पे और YouTube पे messages आ रहे हैं, comments आ रहे हैं कि where have you disappeared, where is your new vlog and all that. So I just want to start by saying that I spent 2 weeks without my husband and he's finally here now because like I said कि मेरे ससुराल में शादी थी जिससे मैं कल basically फारिग हुई हूँ. So tomorrow is the walima and then it's done and dusted. So Talha is only here for a week and as a newlywed having spent 2 weeks apart is also a very big deal. तो इसलिए जितना भी हो सकता है we're trying to go out. वैसे भी शादी घर में काम कितने होते हैं सबको पता है. So first things first. दूसरी बात ये है कि I am, again I've said this before but I'll say it again, I am so overwhelmed कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है कि मुझे समझ भी नहीं आ रही कि मैंने ऐसा किया क्या है जो मुझे इतना प्यार मिल रहा है. But I feel amazing and for everyone asking me कि मैं यहाँ पे कहाँ हूँ और बाकी लोग कहाँ हैं, तो I am back in Karachi and my parents, Mama, Daddy, Nabiha, Iman, Ania are in Islamabad still और वो लोग आ रहे हैं कल for the walima. मेरे जेठ के वलीमे के लिए वो लोग कल आ रहे हैं. और this is the first video that I'm doing all by myself. मेरे पास ना ईमान एडिट करने के लिए है ना मेरे पास ब्रो मुझे सिखाने के लिए है. So I'm very nervous of course because this is the first time doing everything by myself. So I have a very interesting story that I want to share with everyone. और पता नहीं कौन इसको कैसे इंटरप्रेट करता है लेकिन I feel like I had the adventure of a lifetime. अब सैटरडे को तलहा की जो फ्लाइट थी that was landing and he had a 10-hour layover in Dubai and so I was going to land in Karachi from Islamabad at 5 p.m. and Talha was landing at 9 p.m. तो मेरे पास वो 4 घंटे थे till I had to go pick him up at the airport. तो मैंने एक पूरा प्लान बनाया था कि मैं लैंड करूँगी, मैं घर आऊँगी, घर आके फिर मैं चेंज करूँगी, I'll get dressed, I'll go to the salon, I'll get a nice manicure, फिर मैं जो हूँ I'm gonna go जाके फूल लूँगी, फिर एयरपोर्ट जाऊँगी तलहा को पिक करने के लिए. और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. Like I had planned everything so carefully. टाइम से उठी, टाइम से सोई, बल्कि सोई भी नहीं थी मैं. तो मैं, अली, अनिया, वी वर अप ऑल नाइट. जो हमने लास्ट व्लॉग बनाया था उसमें हमने बोला भी था कि सुबह के 7 बज रहे हैं. मेरी फ़्लाइट थी 3:30 बजे दोपहर की. तो हम वी वर अप ऑल नाइट. हम लोग रात के आई थिंक हम लोग कोई 8 बजे सब लोग गए अपने अपने कमरे में सोने के लिए और मुझे लाइक इतनी जल्दी नींद नहीं आई. तो 10 बजे जाके आँख लगी और 12 बजे मैं उठ गई कि मैं कॉफ़ी शॉफ़ी पी के निकल जाऊँ. एंड आई वॉन्टेड कि मैं तैयार होके ही निकलूँ एक दफ़ा. लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, एयरप्लेन में लाइक एयरप्लेन से उतरते ही ऑब्वियसली नहाते हैं बिकॉज इतने सारे लोग होते हैं और ट्रैवलिंग मेक्स यू whatever. But anyways, my point is it was a bad decision because I traveled on the worst flight of my whole life. पहले तो ये था कि I was very excited to see Tala after 2 weeks. You know, being a newlywed, it's a very big deal to be away from your partner for 2 weeks. So I was really looking forward to it. Like I was very excited. बहुत खुशी हुई थी मुझे. तो everything that I planned उसमें से मजाला जो एक चीज़ हुई होगी, everything went upside down. Anya and Ali dropped me at the airport on time. हम लोग रास्ते में अभी अली I don't know वो vlog कब लगाएगा लेकिन he recorded us going to the airport saying bye everything. I don't know when I'm gonna see Anya and Ali again because I don't think वो कराची के चक्कर लगाएंगे अब जब तक मैं जाती हूँ तब तक. So I'm here for another few weeks लेकिन I don't know उन few more weeks में अली और अनिया का आना होगा या नहीं. तो मैं एयरपोर्ट पहुंची हूँ. I was on time, boarded the flight. I met Talha was awake. He was in Dubai जहाँ उसका ले ओवर था. I was texting him कि सही है, I'll land इतने बजे, I'll come pick you up at 9 o'clock. सब कुछ सही हो जाएगा. जहाज़ में बैठ गए हैं, सबने हो गया, अनाउंसमेंट हो गया सबका कि भाई कि ready, you know, like everyone's seated, cabin crew, something, whatever. And the plane wasn't moving. सही है, मतलब मैं देख रही हूँ कि सब लोग बैठे हुए हैं और जहाज़ was fully loaded. मतलब कि एक कोई सीट जो मजाला जो खाली थी और मेरी सीट जो थी वो बहुत ही कोई अजीब सी सीट थी, कोने में बिल्कुल जो विंडो सीट नहीं होती है. It was a window seat in the corner without a window. So I was already very crammed and stuffy, but again I was just like my main focus is to get there in time so I can do everything as planned. But like I said, nothing happened as planned. Okay. So everyone was seated and I'm like, so the plane's gonna go in taxi now and we're gonna take off, I'm gonna land, everything's gonna be perfect. But that didn't happen. The captain announced that
made an announcement saying that everybody please get off the plane because the door of the plane wasn't closing. And I was just like, what is happening? At that moment, I had a very bad feeling कि भाई ये तो जैसे मैं जा रही थी वैसा कुछ भी नहीं होगा, तो this is gonna be like a little bit of problem. खैर हम लोग जहाँ से सब लोग उतरे हैं, उसके बाद पूरी हबर दबर मची हुई थी. लाइक जो पूरा गेट था वहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं. There was a lot of, you know how Pakistani people are, they barely have any hold over their temper, myself included of course, because I really wanted to be here and I wasn't, and I had a feeling that I wasn't going to be here on time and जो मेरा प्लान था वो सारा ख़राब हो जाएगा. तो I was also very on edge. तो चीखम चाखी हो रही है हर जगह, ये क्या मसला है, जहाज़ में क्या मसला है. तो मैं जब जहाज़ से उतरी तो एक साहब थे, he figured out what's going on apparently and I had no idea. He said that जो जहाज़ का दरवाज़ा होता है basically, उसकी जो रबर होती है basically that pressurizes the cabin or whatever the physics is, I don't know the technicalities of it all, but the door when it closes there's a rubber between it that keeps the air from going in or out. Please, this is like I'm explaining it to you in layman terms, so please deal with it. तो वो जो रबर थी ना वो गायब हो गई थी basically, वो दरवाजे के अंदर चले गए थे. तो there was like a little bit of gap, तो जहाज के दरवाजे में से हवा आ रही थी or something like that, like there was like a bit of air passing through. ये था. तो जब हम लोग उतरे जहाँ से सब लोग इकट्ठे हुए हैं लाउंज उस पे गेट में, तो turns out that was true. उन्होंने बोला कि यही है. मैंने बोला कि कब तक ठीक हो. उन्होंने बोला कि अभी हम लोग मेंटेनेंस को फ़ोन करेंगे, मेंटेनेंस आएगी, दरवाज़ा ठीक करेगी, फिर हम लोग ये फ़्लाइट बोर्ड करके जाएंगे. एंड आई वाज लाइक उसमें कितनी देर लगेगी? 3-4 घंटे लग सकते हैं. 3-4 घंटे meant that Talha was gonna land when I wanted to receive him, and I'm there standing at the airport in my night suit, and I'm just thinking about everything that I had to do and I couldn't do. तो खैर I hadn't eaten breakfast because I was in a hurry because I wanted to make my flight in time. तो मैं गई हूँ जल्दी में और मैंने फिर अन्या को फ़ोन किया. अन्या को मैंने पूरी सिचुएशन बताई. मैंने कहा अन्या ये हुआ है. शी इज़ लाइक अच्छा रुको तुम्हारी वाली फ़्लाइट रिफ़ंड कर देंगे हम लोग, तो लेट मी फाइंड अनदर फ़्लाइट. और उस दिन की और कोई फ़्लाइट्स नहीं थी. फिर मेरी अम्मी का फ़ोन आया, उन्होंने बोला बेटा तुम एक काम करो, तुम बस में चली जाओ, सही तुम्हें जाना है तुम बस में चली जाओ, या तुम कल तक रुक जाओ और ये कर लो. मैंने कहा कि ही इज़ हेयर फॉर लाइक 7 days, आई डोंट वांट टू वेस्ट लाइक अ होल डे या जो भी, एनीवेज बट आई रियली वांट टू बी हेयर. मतलब मुझे आना था कुछ भी करके. लाइक मेरा आई एम अ बिट स्टबर्न इन सम सॉर्ट ऑफ वे. सो मेरा ये था कि भाई जब मैंने एक चीज़ सोची हुई है तो मेरे प्लान के मुताबिक ही हो, और जब वैसे नहीं होती है तो इट रियली मेसेस विद माई हेड एंड आई डोंट लाइक दैट. यू नो आई डोंट डू वेल विद चेंज, whether it's a plan, whether it's something that I use. I just don't like things changing. तो मैं बहुत I was just डटी हुई थी मैं कि मुझे आज ही जाना है और बस जाना ही जाना है. खैर उसके बाद वहाँ पे खड़े उसी फ्लाइट में मुझे एक माँ बेटी मिली, उनसे मेरी बातचीत हुई. इत्तेफाक की बात है कि दे लिव इन कराची एंड दे लिव इन द सेम सब डिविजन दैट आई लिव इन. तो we exchanged numbers, we were talking and everything happened. मतलब कि हमने बातचीत की. कोई जाए कोई रिपोर्ट लेके आ रहा है कहीं से, कोई जाए कोई रिपोर्ट लेके आ रहा है कहीं से. खैर 1-2 घंटे गुजर गए इसमें. उन्होंने बोला फिर क्या हुआ, काउंटर के आसपास बहुत रश लग गया, सब लोग अपने NSC लेके जा रहे हैं. मैंने कहा अब क्या हो रहा है. मैंने कहा भाई साहब क्या हो रहा है. बोल रहे हैं कि ये जो है बोल रहे हैं कि जहाज़ का दरवाज़ा ठीक नहीं हुआ है, तो ये जहाज़ ऐसे ही जा रहा है लेकिन इट्स सेफ, लेकिन जिन लोगों को नहीं जाना है उनको वो रिफ़ंड भी करेंगे और फ्री टिकट भी देंगे, लेकिन जिनको जाना है वो जाएंगे. लेकिन दरवाजे की कैपेसिटी की वजह से हमें थोड़ा सा वेट ऑफलोड करना पड़ेगा. तो वी आर ओनली टेकिंग 85 पैसेंजर्स. तो जो बाकी सब उन्होंने जो रश लगाया था काउंटर के आसपास, दे वर ऑल देयर फॉर अ रिफंड कि हमारी टिकट रिफंड करें एंड वी वांट अ फ्री टिकट. दैट वाज Sweenair गिविंग देम द कॉम्पनसेशन के फ्री टिकट बेसिकली फॉर व्हाटएवर ट्रबल वाज कॉज्ड. आई हैव टू गिव इट द एयरलाइन दो, दे हैंडल एवरीथिंग वेरी वेल. आई मीन मसले हो जाते हैं बट nobody wanted to get on the plane. बहुत कम लोग थे. आखिर में जो बोलते हम लोग चले जाते हैं, अल्लाह का नाम लेके चले जाएंगे. तो मैंने फैमिली ग्रुप पे मैसेज किया पूरा. मैंने कहा ये सीन है और मैं तो जा रही हूँ. तो नबीहा और मामा का रिप्लाई कि डोंट टेक द रिस्क, और नहीं जाओ, बस में चली जाओ, कोई और फ्लाइट देख लेते हैं, हम कल तक वेट कर लो. मैंने कहा कुछ नहीं होगा, आप बस दुआ करें, कुछ नहीं होगा, चले जाते हैं. अब मैंने इतनी लाइक आई एक्टेड ऑल ब्रेव एंड ऑल, बट व्हेन आई गॉट टू द प्लेन, व्हेन द प्लेन वाज अबाउट टू टेक ऑफ, तो आई वॉज वेरी स्केर्ड. तलहा बोला था कि भाई कि आई वॉन्ट यू हियर बट आई वॉन्ट यू अलाइव, तो देख लेना. खैर एनीवेज उसके बाद क्या हुआ कि व्हेन वी हैड द 85 पैसेंजर्स जो जहाज़ में जा रहे थे, जिनमें से मैं एक थी. अब जो पूरा सामान लोड हो गया जहाज़ पे पूरे पैसेंजर्स का, वो नहीं जा रहे हैं. अब पूरा सामान निकला है, बारी जाके जो बंदे हैं वो अपना सामान ले रहे हैं. इसमें टाइम लगा कोई 1-2 घंटे इसमें लगे हैं. एंड देन मतलब
एक के बाद एक चीज़ थी, पीपल वर स्केर्ड। जिन माँ बेटी से मेरी बातचीत हुई थी, देयर हस्बैंड एंड फादर वाज अ कैप्टन। उन्होंने बोला कि आई डोंट थिंक दिस फ्लाइट, ही इज़ लाइक दिस फ्लाइट सेफ बट आई जस्ट डोंट वांट यू टेक द रिस्क, सो डोंट गो। मैंने कहा सही है, ठीक है। मैंने कहा मैं तो जाऊँगी। मैंने कहा आई हैव अ डेथ विश, आई एम गोना गो। खैर, this was the worst flight of my life. It was the worst flight of my life because I think ये जो flight miss हुई है, इतनी 3-4 घंटे का डिले हुआ है, उसकी वजह से all the क्या बोलते हैं उसे, air traffic control and all that was all messed up, and इतनी waiting थी. We had to wait to take off. We had to मतलब land होके clearance के लिए wait करना पड़ता हमें कि भाई land होके how we're gonna get off, किस terminal पे हम लोग जाके like you know उतरेंगे, कहाँ क्या होगा। खैर anyways, जहाज में बैठ गए हैं, no AC during the whole flight for some reason. अच्छा नहीं, इससे पहले जहाज़ में जब हम लोग आए हैं तो फिर पूरे जहाज़ में मतलब जहाँ मैं जा रही हूँ एंड में जाके सीट सोई सी थी और उसके ऊपर लिखा था आउट ऑफ ऑर्डर और समथिंग। सो दैट वो देख के थोड़ा सा वाज लाइक अ लिटिल बिट स्केरी कि ये क्या हो रहा है, मतलब कि मे बी आई मेड अ मिस्टेक, लाइक मे बी दिस इज़ वेरी डेंजरस। लेकिन फिर आई वाज लाइक कि और भी लोग हैं तो यू नो आई एम नॉट द ओनली वन, सो आई एम नॉट द ओनली वन हू इज स्टूपिड। सोई भी सिर्फ 2 घंटे की थी, लेकिन मुझे फ्लाइट में नींद बिल्कुल भी नहीं आई बिकॉज दैट्स हाउ स्केर्ड आई वाज। ज़रा सी टर्बुलेंस आई, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुए, मैं कलमा पढ़ने लग जाऊँ बार बार बिकॉज दैट्स हाउ स्केर्ड आई वाज। इवेंचुअली व्हाट हैपेंड वाज माय प्लेन लैंडेड एट 9 एंड आई स्वेयर टू गॉड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, लेकिन ये जहाज़ मेरा है, सही यूँ जा रहा है, और ये मुझे एमिरेट्स का जहाज़ ज़ाहिर इसमें तलहा है। It was the same time. It was the exact same time. I had no luggage. I only had one bag, मेरे पास हैंड कैरी में ही था। तो मैंने वहाँ से वो अच्छा जहाज़ जब लैंड कर गया है, 45 minutes we were in the plane. 45 minutes तक we were in the plane, and then again चीखम चाखी हुई, लोग चीख रहे थे बिकॉज बच्चे फ्लाइट पे you know सांस नहीं आ रही है, और मतलब देयर इज नो एयर फ्लो व्हाटएवर, देयर इज नो वेंटिलेशन, प्लेन बंद है, डोर्स नहीं खोल रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं ये। तो 45 minutes वी वर इन द प्लेन आफ्टर द प्लेन लैंडेड। जहाज़ में इतने सारे लोग हैं, मतलब कि एक ही उसमें, एंड इट वाज सफोकेटिंग बेसिकली। तो उससे और फ्रस्ट्रेशन हुई, एंड AC था नहीं बिल्कुल भी, तो और आई वाज लाइक यू नो कि सो मच फॉर मी गेटिंग रेडी एंड लुकिंग ऑल नाइस एंड गोइंग टू रिसीव माय हस्बैंड एट द एयरपोर्ट, लुकिंग ऑल प्रिटी, ऑल दैट प्लान बेसिकली went down the drain. But anyways, I was like अब जो भी है जैसा भी है ठीक है, just like you know whatever, it's for the better. I got off the plane और 45 minutes बाद, और उन्होंने प्लेन से कैसे उतारा 45 minutes बाद, इस मतलब कि उसमें भी वो जो वो नहीं होती, what do you call that, the staircase, वो भी नहीं था। तो उन्होंने बस staircase लगाया और हम लोग जो है ना बस जहाज़ खड़े हुए, बस पूरे उसमें हम लोग खड़े हुए कि क्या हो रहा है ये, मतलब there was no bus to take us from the plane to the gate of the airport. It was really something. This flight was really something. But my point was कि हम लोग मतलब जब लैंड किए, जब बोर्ड करे तो तालियां बज रही थी, मतलब it was such an adventure. तो फाइनली जब वो बस आई है, हम लोग बस में बैठे हैं, फिर हम लोग एयरपोर्ट से निकले। मैं तो सबसे आगे भाग के मैं डोमेस्टिक अराइवल से निकल के नेशनल अराइवल्स की लाइन में लगी हूँ मैं, और दुबई की फ़्लाइट जो जिस पे तलहा आ रहे थे, सारे वो लोग निकलने लग गए थे। एंड मैंने बैक पैक खोला, अपना मेकअप वाइफ से पहले मैंने मुंह साफ़ किया, मैंने ऐसे ब्रश वश करके मैंने ऐसे लाइक यू नो बस ऐसे खड़ी हो। दैट वाज द मोस्ट आई कुड डू, एंड so I just thought about like you know what my plan was and what eventually ended up happening. Fair, everything worked out in the end, of course, because he's here now and the wedding went great, alhamdulillah, sab kuch ho gaya khairiyat se. He's here for another couple of days and I am going to introduce you to him tomorrow, because right now he's very tired and he's sleeping. So tomorrow, because a lot of people have been asking me that we really want to see him, Tala se milwaye, introduction karaye and all that. So let's see tomorrow. Basically there's a reason that I don't it took me a very long time myself to develop the kind of confidence to be able to do this, all thanks to bro and Anya and my mom. But I know that there are some people जो उनको खैर मैं क्या बोलूँ, लेकिन they just have, there is this saying that's my favorite saying and it goes like, if you don't have nothing nice to say then don't say nothing at all. You know, अगर आपको कुछ अच्छा नहीं है कहने को तो आप कुछ भी ना बोलें। तो काफ़ी लोग हैं ये जो ये बात समझते नहीं हैं, and it really used to bother me a lot until I finally accepted it
and that's when I started doing this because I know कि कुछ भी कर लो वो जो story नहीं है गधे वाली गधे जो story that story with the गधा कि एक गधा बाप बेटा एक गधे को चला रहे होते हैं, बेटा बैठा हुआ होता है तो फिर लोग बोलते हैं भाई कि बूढ़ा बाप है बेटा चला रहा है। जब बाप जो होता है वो फिर दोनों बैठते तो बोलते हैं कि इस पे जुल्म कर रहे हैं, गधे पे दोनों बैठ के दोनों उतर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई कितने जाहिल लोग हैं, गधा रखा हुआ है लेकिन फिर बैठ नहीं रहे हैं। तो कुछ भी कर लें, पीपल विल ऑलवेज हैव समथिंग टू से बिकॉज उनकी नेचर है कि उनको बस बोलना है तो बोलना है। मे बी इट्स देयर वे ऑफ हेटिंग, इट्स देयर वे ऑफ जेलसी और व्हाटएवर इट इज, बट दैट्स हाउ पीपल आर। अगर उनको कुछ बोलना है तो वो बोलेंगे। So the reason why, because I get a lot of questions about my in-laws, my husband and everyone. So the reason I don't want to involve them in this part of my life is because I don't want to subject them to this kind of negativity, because me, I can take it to some extent. Like, people criticize the way that I talk, that it's too fast or whatever, but I'm very protective of the people that I love, and I can't stand anyone saying anything to them. So isliye, but khair, I will introduce you to Zala tomorrow, and tomorrow is the walima, so let's hope everything goes well. I will try and film how I get ready. I'm wearing a sari and I'm very excited. I'll also show you the shadi wala look, but I'm very excited. And until next time, bye bye.